Morning, my friends. I am Vishal Kashyap. Now today I am starting the first exercise to class 11th, the set theory. First of all, we say that what is the history of set theory? It is not set exactly time at which it invented. The set theory has a broad area, not only mathematics but physics and other invention also. It developed by the mathematician Cantor, 19th century. The person, not only one person, creations. George Cantor, early 19th century, saw that interpretation of set theory, whether the mathematician straddling the understanding the concept of infinity. In 1872, Cantor formulated real numbers are sequences of rational numbers. Cantor saw that equivalence, one-to-one correspondence, which is powerful conception today. Cantor says that infinity lives of infinity or infinitely many infinite cardinals numbers. It is so confusing, but not mention the further classes we discuss about it. In 1817, Richard Dedekind, who works on George Cantor's statements, it developed the concept of cuts defining real number. In 19 Bertrand Russell's paradox in 1904, Zermelo says that every set can be well-defined order. Further, Kurt Gödel and Paul Cohen works on this field. So, the history of set theory is very large and not only one person creation, lots of persons works on this field. In this session, we learn what is the set and why we read it and why it is necessary. So, we think that there is the three main features. The three set first questions: what is the set? Why it be used and how can we represent? The three things we learn: what is set, why we read it, and representation. How can we represent the set? Now, first of all, define what is the set. Set is the collection of well-defined. बात करते हैं सेट क्या है, तो सेट कलेक्शन है वेल डिफाइंड का. अब वेल डिफाइंड क्या, व्हाट इज वेल डिफाइंड? फॉर एग्जांपल, इफ वी से दैट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है जो मैथ में इंटेलिजेंट हो वो फिजिक्स में उसका कमजोर हो सकता है, जो जिसका मान लीजिए फिजिक्स ज़्यादा मजबूत हो उसका हो सकता है कि हिंदी वीक हो, तो हिंदी के लिए वे इंटेलिजेंट नहीं हुए लेकिन मैथ में है, फिजिक्स में है. इस तरह से हम देखते हैं कि इंटेलिजेंट यहाँ पे डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक इसी तरह से गुड टीचर, एक एग्जांपल दूसरा ले, गुड टीचर. अगर गुड टीचर को देखते हैं हो सकता है कि आपकी नज़र में वो टीचर अच्छे हो, किसी दूसरे की नज़र में वो टीचर अच्छे नहीं हो. आप उनकी बात को समझते हो, कोई दूसरा उनकी बात को नहीं समझता हो, तो इस तरह से गुड टीचर क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो होता है वो सेट कहलाता है. एंड व्हाट इज द सेट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड. एंड द अदर definition, set is defined. The set is the collection of distinct and distinguishable. That is, the distinct and distinguishable collection is called set. There are two words, distinct and distinguishable. In Hindi, भिन्न एवं विभेदक, distinct and distinguishable. Suppose we said that
the animals, the set of all animals. It is distinct, not a plant, but it has not distinguishable cow, buffalo or goat, not distinguishable, so it is not well defined, so it is not a set. यहाँ बात करते हैं कि डिस्टिंक्ट भिन्न और विभेदक, यहाँ पे सेट उसे कहेंगे जो कि अलग हो, भिन्न हो दूसरे से, लेकिन अपने में भी वह क्या होना चाहिए, डिस्टिंग्विजेबल होना चाहिए। तो इस तरह से देखते हैं वेल डिफाइंड क्या कहलाता है, तो डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विजेबल कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज द सेट। A well-defined collection of an object. A well-defined collection of an object is called set. The object of set are members. Object of sets are called members. For example, if we take a set of vowel numbers, the set of vowel numbers A, E, I, O, U. This is the vowel letter. The set is written as in a middle bracket and separated out by the commas. This is the form we discussed in the next class. But we say that the well-defined collection of an object is called set. The object of set are members. First, what is the set? Second, why we did, हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं? जाहिर सी बात है कि सेट आजकल के हम लोग 9th और 10th में भी इसके बारे में पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में था। वहाँ पे सिर्फ रिलेस जो था वह रियल नंबर के केस में हमने एक सेट देखा था, फिर इंटीजर के केस में देखा था। तो इस तरह से फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा जो है सो एरिया होता है, इसलिए सेट थ्योरी का बहुत आज के युग में इसका बहुत ज़्यादा एरिया लार्ज हो चुका है। तो we say that not only the set used in mathematics but physics and other field also. The third matter is representation. How set can be represent? The set how can represent? There are 3 ways in which the sets represented. The first, roster form. The second, set builder form, and the third, Venn diagram. First, roster form, second, set builder form, and the third, Venn diagram. There are 3 ways represented on a set. But in 11th, in this class, we study about only 2. First, roster or tabular, both have the same. Roster or tabular form, and the second, set builder form. There are 2 ways by which we represent a set. First, roster or tabular form, and the second, set builder form. How can represent it? We see the next class. Thanks.